शौर्य पराक्रम ओज भरा, दमकता हो भाल जहां। हम उस देश के वासी हैं, बहती प्रेम रस धार जहां। पुरखों की पावन संस्कृति, रग रग में संस्कार भरा। दूरदर्शी सोच, ऊंची विनयशीलता, गुणों भरी धरा। दुर्ग किले हमारी विरासत, हमारी धरोहर प्यारी है। मेहमानों का आदर होता, परिपाठी सबसे न्यारी है। वतन की मिट्टी की खुशबू हर सांसों में बसती है। देश प्रेम की भावना नित नए कीर्तिमान रचती है। हमारी सभ्यता, हमारी विरासत, हमारी धरोहर है। रखेंगे हम संभाल कर, हमारे अमर शहीदों का गौरव है। In this modern age, the greatest Dharohar that we can give to our children are the roots of responsibility and the wings of independence. So, as my co-host said, there are 440 million children, constituting total 42% of India's total population. And as they are the supreme asset or dharohar of our nation, they need appropriate attention and the proper support to grow well and to engage them usefully to serve the country. They are to be looked after and groomed well with their great human touch and concern. We have both an obligation and the duty towards them. We should remember and remind ourselves that the only strong and knowledgeable and virtuous children who can make the country strong and great. Beside ensuring the good quality of health and the nutrition, education must be on the top priority. We at Shiksha Bharati Global School aims to provide the best education and in nurturing in order to ensure a better future for our nation. If we neglect and do not provide the bare need for the health and education of these children, a heavy price have to be paid. In short, if India is to live, so the children are to live well. With the concluding lines, the holistic development of a country should be great concern in both in their interest and in the interest of the country. Thank you so much. बच्चे देश की धरोहर होते हैं और हर देश का भविष्य बच्चों पर ही निर्भर करता है, जो बड़े होकर देश के भाग्य विधाता बनते हैं और उसे विकास की राह पर ले जाते हैं। इसी विश्वास के साथ प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम धरोहर। As the theme proceeds, this annual day function is much awaited event for all of us. This is the time to celebrate our achievement and showcase our success. The purpose of this event is to provide a platform for our students who can showcase their skills and creativity. We would like to take this opportunity to thank our management for their invaluable support and assistance in making this event into a reality. Their contribution have been a crucial role in ensuring that this event is a success. Without their support, this event would not have been possible. We are truly grateful for their generosity, commitment, and our institution. Thank you so much, our manager sir, our director sir, principal madam, admin in charge, all of you. Thank you so much. करतल ध्वनियों की बहुत कम यहाँ पर आवाज आ रही है, कृपया करतल ध्वनियाँ करते रहें। What a fine line said. A pessimist sees difficulty in every opportunity, and an optimist sees the opportunity in every difficulty. With this beautiful line, let me introduce our today's chief guest, Dr. Amiya Chandraji. Please put your hands together to welcome him here. Sir, you hardly need any introduction. We are really proud of the magnificent work that you have done in the variety of capacities in the advancement of society. You are one of the most esteemed elite. Dr. Amiya Chandraji is a multi-faceted civil servant with a deep knowledge and experience in public affairs, monitoring the mega projects, city management, outdoor advertising and public policies, sanitation and urban sector, legislative and the parliamentary affairs, international trades, labor policies and reforms, sports and administration, promotion and arts, aesthetic and culture. He is also earned his PhD,
the doctorate degree in the Central Asian Studies from the School of International Studies from Jawaharlal Nehru University and has authored several renowned books. Please put your hands together for such an elite personality among us. Thank you so much, sir, for your valuable time. Currently, he is a major figure of Development Commissioner of Adani Ports and SEZ Mundra. He is authored a landmark book on Indian OOH, stands for Out of Home Advertising, which will be released very soon. As officer on special duty and in charge of outdoor advertisement, parking, sanitation, MCD, Dr. Ramya ji had also played an instrumental role in framing the outdoor advertisement policy for Delhi as well, which was approved by a full bench of Honorable Supreme Court of India, overruling its own decision and the decision of Honorable High Court of Delhi. We are really delighted to welcome you, sir. Once again, put your hands together for such an elite personality among us. Thank you so much for your valuable time, sir. आज वार्षिकोत्सव की पावन बेला पर हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर अमिया चंद्रा जी। I would like to call upon stage our Honorable Director, sir, Shri Hitesh Bhardwaj, and our Manager, sir, Shri S.C. Rawat, sir, to welcome our chief guest with a token of love. माननीय अतिथि महोदय, विद्यालय प्रांगण में आपकी उपस्थिति से हमारा हृदय जितना पल्लवित है उससे कहीं अधिक गौरवान्वित है। महोदय, आपकी शख्सियत तथा व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं। आपकी मुद्रा तथा भाव भंगिमा आपका संपूर्ण परिचय स्वतः ही प्रकट कर देती है। आपके विषय में कह सकने हेतु वे शब्द भी जुटा पाना मुश्किल है जिनमें आपका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हो सके। आज विद्यालय की इस पावन बेला पर आपकी उपस्थिति पाकर हम कृतार्थ हुए। In the preceding one, we are having Shri R.K. Sharma ji, the chairman of Navjeevan and our group of institutions and the veterinary industries. He is associated with Shiksha Bharati Education Society since many years. I would like to call upon stage Shri Hitesh Bhardwaj sir and manager sir Shri S.C. Rawat to welcome our chief guest, our guest of honor with a token of love. विद्यालय का कण कण हृदय से प्रसन्न मुख मुद्रा में आप सभी का भावों के पुष्प गुच्छ के साथ सुस्वागतम सुस्वागतम के स्वर के साथ अभिनंदन कर रहा है। कृपया करतल ध्वनि के साथ अतिथिगण का स्वागत करते रहें। Now I would like to invite our chairman sir, Dr. Pavan Singhal, and also request our honorable director sir and manager sir to welcome him with a token of love. सम्मान एक ऐसा निवेश है जिसे हम जितना दूसरों को देते हैं वह दुगना होकर ब्याज के साथ हमें मिलता है। तो इसी भाव के साथ सभी अतिथिजनों का स्वागत करते रहें, सम्मान करते रहें। आपकी करतल ध्वनि कम नहीं होनी चाहिए। Now may I call Shri D. Bhattacharya ji, the Vice President of Shiksha Bharati Education Society, and may I also request our Director sir and Manager sir to welcome him with a token of love. दिव्य हुआ पांडाल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया, आए जो श्रीमंत।
Now I would request Shri Y.K. Chauhan sir, the member of Shiksha Bharati Education Society, and Honorable Director sir and Manager sir to welcome him with a token of love. Let's put your hands together to welcome these elite dignitaries among us. विद्यालय की परंपरा के अनुसार अतिथि महोदय का स्वागत किया जा रहा है। आज के शुभ उत्सव पर पधारकर आपने हमें कृतार्थ किया, हम आपका हृदय से आभार करते हैं। कृपया करतल ध्वनि अपनी करते रहें। Thank you so much, Director sir, Manager sir. Sing like no one is listening. Dance like nobody is watching. Love like you've never been hurt. And live like it's heaven is on earth. We have a lot of talented performances lined up for you today. And we are really excited to introduce you them one by one. From the dance performances to the musical act. And we have a diverse range of performances that are surely to keep you entertained throughout the evening. But before we begin, I would like to call upon stage Yashika, our head girl, and Laksha Dalal from class 9D to proceed this event. Please put your hands together to welcome our kids. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसा कि हमारी संस्कृति में जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो हमारे विघ्नहर्ता गणपति जी को प्रथम निमंत्रण देते हैं, तो क्यों ना आज के उत्सव का आरंभ गणपति जी के वंदना के साथ करें। तो आइए विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह का श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 विघ्नेश्वराय गौरीसुताय करुणाकराय धूम्रवर्ण एकदंत गणनायकाय। जीव जडला चरणी तुझ्या रे, शरण आलो बापा तुला रे। जीव जडला चरणी तुझ्या रे, शरण आलो बापा तुला रे। नाद घुमतो दाही दिशा रे, मंगल मूर्ती मोरया। तूच करता साऱ्या सुखाचा, दुःख हरता त्राता जगाचा। तूच आधी
A big round of applause for our performers. Their devotion has left us all feeling inspired and blessed. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कृपया तालियां बजाते रहें। हमारे बच्चों ने कड़ा अभ्यास, कड़ी मेहनत की है आज के दिन। Such a mesmerizing performance presented here. In the continuation, this is just one very common factor. The success of any education system depends on the principal. The principal is the only deriving force who manage, coordinate, guide, supervise the various activity of an education institution. This is my honor to welcome our principal madam, Shrimati Manisha Kaushal, to present the annual report for the session 2023-24. Let us welcome her by putting our hands together. A very warm welcome to one and all present here. Honorable Chief Guest, Guests of Honor, distinguished guests, Honorable Director Sir, Manager Sir, respected parents, dear teachers and my dear students. Once again I welcome you all on behalf of Shiksha Bharati Parivar on the occasion of Annual Day. First of all, I would like to place my thanks to the management of Shiksha Bharati Global School that organizes such events in a larger interest of the student, which is very important for the overall development of every child. Through these activities, our endeavor is to provide a platform to our young student to be worthy policymaker of Bharat. New campus. The new structure of the school is equipped with all modern facilities including inclusive education. This campus is totally digitalized and giving online facilities in different affairs with all update of the school as well as children. We have smart boards in all classes to give a better view of the chapter and more than 150 CCTV cameras to keep our close eye on the activities of our students. To inculcate leadership qualities and confidence in our student, dear parents, we have house system and time to time we organize inter-house competition. We have a council of prefects to check discipline, to extend helping hand in various functions of the school. Dear parents, to motivate our student, we have the concept of Student of Month. Every month we select a student from each class who proves better in overall activities like discipline, academics, sports and cultural activities. Our students are excelling in the field of NCC and Scout and Guide. Shiksha Bharati Educational Society. Shiksha Bharati Educational Society has been working continuously for the goodness of society. The society bears the expenses of excursion and educational trips for the school staff. Academic achievements. Shiksha Bharati Global School has been continuously making all-round efforts for the overall development of young progenes. To serve the purpose, we provide them a platform to nurture their academic, sports and cultural skills. Dear parents, your role is equally important for this. Parenting is an ever-evolving process that is not just limited to providing the basic nurturing needs of the child. A good parent also provides a base required for the development of the cognitive, social skills of the student. We are proud of our students who have achieved high positions in curricular and co-curricular activities. Dear parents, I want you to give huge round of applause for the 10th and 12th class student. 10th class 100% result, 12th class 99.14%, total number of distinction 235. Most of our students secured 90% and above in 10th and 12th academic session 2022-23. And today they all are studying in reputed universities and institutions of India. One of my student, our student Chirag of 12th class got the chance to represent Republic of India at the UN conference. Please give huge round of applause. Chirag received praises from the top committee official presented in the UN conference to take such critical matter and with a very absolute diplomatic style. And the Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, also appreciated the boy via Twitter. Please give huge round of applause. He is working in a very reputed firm. May God bless him with many more successes in his life. Besides this, Bhagwita Panda has qualified NEET. Dear parents, keep on giving blessing and clapping. My list is endless. Has qualified NEET and secured admission in Lady Harding Medical College, Delhi. Amit Kumar in Maulana Azad Medical College, Delhi. Aryan Gulia has cracked
IIT and secured admission in IIT Chennai, whereas Vikrant Upadhyay has got admission in Shri Ram College of Commerce, Delhi University. Sahil Kumar qualified his civil services and joined Indian Revenue Service. They are the pride of the school. Give huge round of applause. Not only in academic, our students are doing much achievement, getting award for the school in cultural achievements. Kala Utsav district level, Ritik 10th hai, first position. Zonal competition, classical dance, boys, Ritik 10th hai, first position. Girls, Sanchari 8th E, third position. Drawing and painting, Srishti 9D, first position. Paper mache, Yuvraj 9D, third position. Essay writing, English competition, Akshita Chaudhary 9th A, second position. Classical dance, boy, Ritik 10th A, second position. Folk dance competition, 15 students got second position. Declamation, Rakshita Chaudhary 11C, second position. Please give huge round of applause for all these winners. That encourage us to do much more better in their life. Sports achievement. Sports play a very major role in our life because that keep us fit. So we want that every child should groom in every sense. Not only academically, they should come forward and do best in their sports. So we have the team which is working excellent, and our student has achieved so many prizes in sports. Athletic shot put, zonal, Ayush 9th E, second position. Ananya Rawat 9th C, third position. Tanish 12th C, third position. Delhi State School Games Taekwondo, Ananya 9th C, gold medal. Surbhi, they also need your blessing, dear parents. Thank you so much. Surbhi Singh 10D bronze. National Taekwondo Championship, Ananya 9th C, gold medal. Shaurya 6th C, silver medal. Janvi 10th B, silver medal. Taekwondo zonal, Ananya Gupta 7th C, gold medal. She last week only secured gold medal again in CBSE Taekwondo. Please give huge round of applause. These students are doing so much hard work and doing their academic also very well. Arav Saraswat 6A bronze. Abhay Gupta 7th E, gold. Rihan Ali 9D bronze. We congratulate all our achievers and we wish them a grand success in their life. Dear parents, your support, your cooperation is very much required, and I really appreciate you are always standing with us. Let us enjoy the function and do appreciate the hard work done by my students and the teachers. Thank you so much. धन्यवाद मैम। समय समय पर विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम, प्रतियोगिताओं व पुरस्कृत विद्यार्थियों के बारे में विद्यालय पत्रिका द्वारा अवगत कराया जाता है। हमारा सौभाग्य है कि आज विद्यालय के वार्षिक उत्सव के पावन दिवस पर माननीय गणों के शुभ कर कमलों द्वारा वर्ष 2023 की पत्रिका का उद्घाटन किया जा रहा है। A SNEWS newspaper, the newsletter, is a perfect medium to allow responsible expression, changing of ideas, peer-to-peer influences, and much more. So this must be a perfect day to release the same. Here we would like to release our school's newsletter for the month from April to September 2022-23. I would like to invite all the dignitaries to the stage for doing this honor. I would be much appreciate if our chief guest, Dr. Amiya Chandra ji, our respected director sir, Shri Hitesh Bhardwaj ji, our manager sir, Shri S.C. Rawat ji, please kindly grace the stage and do this honor for the ceremony. Please put your hands together. This is indeed a gracious moment for all of us, and this is acknowledgement of our hard work and success. सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया करतल ध्वनि ना रोकें। शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल की विद्यालय पत्रिका के लिए जोरदार तालियां। अब समय है शिक्षा भारती ग्लोबल के
होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करने का, जिन्होंने समय समय पर विद्यालय व विद्यालय से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। कृपया करतल ध्वनि के साथ हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहें, उनका उत्साहवर्धन करते रहें। I would like to request our chief guest, our honorable director sir and manager sir, kindly grace the stage and do this honor to kindly bless the children with the prizes. Time to time, our school is organizing and participating multiple events and competition, where our children have also come with the flying colors. I would like to invite Ritik of class 10th A, which was participated in Kala Utsav at district level and secured first position. It was indeed a struggleful participation and he has scored the first and top class position in the district level as well. So I guess the appreciation should be at loud. ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, हासिल करने हैं लक्ष्य कहीं, तुम्हें इतिहास रचाना है। कृपया करतल ध्वनि करते रहें। At the national level, the Shiksha Bharati has also come up with the flying colors. In the National Taekwondo Championship, we are having so many talented winners. May I invite Ananya from class 9C, who secured the top position in the National Taekwondo Championship. Ananya. Shaurya from class 6C secured second position. Jahanvi from class 10th B secured second position. And Ananya from class 6C secured the third position. गर्व है हमें कि तुमने पाकर अपना लक्ष्य, अपनी एक नई पहचान बनाई है, खुद का रोब बढ़ाया है और हम सब की शान बढ़ाई है। In 38th Delhi State Taekwondo Championship, our students have participated and they have secured the gold as well as the bronze medal in them also. For that purpose, I would like to invite Ananya from class 6C and Arav from class 5th A. Please put your hands together. Your applause not only celebrates our success but also encourages us to strive for excellence. Congratulations to all the winners, your hard work and talent and determination as well that really come in the colorful wings. Today we have privilege of acknowledging the remarkable individuals here who have displayed these qualities and have emerged as winners in their respective field. Besides this Taekwondo Championship, we have Delhi State Tug of War, where our junior girls under 17 has also come up with the flying colors and they have secured the runner-up trophy. For that purpose, I would like to invite Janvi Batra from class 10th B, Jagriti from 10th D, Srishti from 8th B, Kunjan from 9th A, Bhavika from 9th B, Chitrakshi from 7D, Chanchal from class 7D, Kanishka from 10th A, Siddhi from 7th E, and Lavanya from class 7th E. Please put your hands together. खेल जगत आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है और शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल का खेलों व खिलाड़ियों से गहन संबंध रहा है। खेलों के क्षेत्र में विद्यालय की अपनी विशेष पहचान रही है। कृपया हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन तालियों के द्वारा करते रहें। Whereas in the Delhi State Tug of War Championship, where our sub-junior girls has also secured the runner-up trophy. For that purpose, I would like to invite Charvi from class 9th A, Prabhya from class 8th E, Anusha from class 9th B, Srishti from class 9th D, Pratishtha from class 9th A, Jahanvi from class 8A, Lavishka from class 9th E,
Riya from class 9C, Anushka from 9th D, and Arohi Gupta from class 9th D. Please, dear parents, applaud them for their really hard work. These children are really working hard in such a extremely sunlight. परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं, पूरे जमाने से बधाई मिलती है। In the recently the CBSE Inter-School Sports and Game Championship at the Taekwondo, Ananya from class 7C secured the gold medal here. This is indeed a pride moment for us. यूं ही हासिल करो सफलता, एक दिन तुम इतिहास रचाओ, पार करो हर बाधा को, सारे जग पर तुम छा जाओ। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें हमारी नन्ही खिलाड़ी का। An exceptional principal is like a rock, standing firm and face the challenges and guiding the school towards success. It is my great honor to announce that our principal, Madam Shrimati Manisha Kaushal, was awarded with the Shikshak Samman in recognition of her outstanding contribution in the field of education and community service by the Coordinating Committee of Public School. Put your hands together for our principal, Madam. शानदार उपलब्धि के लिए हमारी मैडम को तालियों के द्वारा बधाई दें। जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करें। Congratulations, Madam. We have 4 house systems. Just to add the co-curricular activities, we have 4 houses that are Subhash House, Vivekanand House, Lakshmi Bai House, and Shivaji House. So this year, and even throughout the session, these children and the students, the teachers, they made all-round efforts in these co-curricular activities. And we have 8 to 10 teachers in each house. And these teachers put all their efforts in improvising the co-curricular activity in these students throughout this session. In this session, here we have the first winner house is Vivekanand House. Please put your hands together for the wardens, West wardens, and the associate. May I call upon the stage the warden, Pushpa Kishore ma'am, Shikha Mukherjee ma'am, PS ma'am. Please reach at the stage. विजेता सदन, विवेकानंद सदन। विजेता सदन के लिए जोरदार तालियां। Vivekanand Wardens, Mrs. Pushpa Kishore ma'am, Vice Warden Shikha Mukherjee ma'am, Mrs. Shalini ma'am, Kanika ma'am, Jayaprakash sir, Miss Sunita PS ma'am, Miss Neeru Tandon ma'am, Miss G. Brinda ma'am, Miss Natasha ma'am. Congratulations to the Vivekanand House. विवेकानंद सदन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। Your hard work, talent, and determination have paid off, and you are rightly deserve the recognition that you are receiving today. May this moment be a stepping stone and even greater accomplishment in the future for your exceptional performance and truly won everyone's heart. A big thank for you, sir, for kindly distributing the awards, and to you for encouraging this talented with your cheers. Thank you so much, sirs, for your honor. धन्यवाद सर। Remember, this is not the winning, but the spirit of participation and giving your best. So let's continue to support and celebrate each other's achievement. Let's praise them with a huge round of applause once again. In the modern age, freedom is the power to right to act,
speak and change as one wants with freedom is changing time to time. Do you know how? Where we today seek freedom in wearing our favorite attire or chilling out. In past time, it meant really different. Children like us used to sacrifice their life to gain Indian independence. Puzzled? Let me give you a hint. One fine man said, "They may kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit." Bhagat Singh is considered one of the most influential nationalist leaders of our Indian independence movement. Bhagat Singh is often referred to as Shaheed Bhagat Singh. The word Shaheed means martyr. If the deaf are to hear, the sound has to be very loud. When we dropped the bomb, it was not our intention to kill anybody. We bombed the British government. British must quit India and make it free, said Bhagat Singh. इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत योगदान देने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह केवल अंग्रेज़ों से बदला लेने वाले सशस्त्र क्रांतिकारी नहीं थे। कई ऐसे मौके आए हैं जब पता चलता है कि वे केवल भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के अलावा भी बहुत कुछ चाहते थे। भगत सिंह का जन्म पंजाब के लयालपुर के बांगा गांव के एक सिख परिवार में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह लाला लाजपत राय को बहुत मानते थे। लाला जी भी भगत सिंह को बहुत ही स्नेह दिखाया करते थे। लाला जी एक तरह से भगत सिंह के परिवार के सदस्य की ही तरह थे। लाला जी की आर्य समाजी सोच का असर भी भगत सिंह पर देखने को मिलता था। ब्रिटिश शासन के अधीन साइमन कमीशन, जिसका नाम देश के राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करने के लिए सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। हालांकि समिति में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे राष्ट्रवादियों को गुस्सा आया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आया और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ। समूह पर साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंसक लाठी चार्ज करके आंदोलन को दबा दिया, जिसमें लाला लाजपत राय सहित कई लोग घायल हो गए। दुर्भाग्यवश चोटों के कारण वह वीर गति को प्राप्त हुए, जिसने भगत सिंह को अंदर से झकझोर कर रख दिया। वहीं चाचा अजीत सिंह के संपर्क में आने से उन्हें गदर आंदोलन की जानकारी मिली। गांधी के विचार असहयोग आंदोलन से काफी पहले देश भर में फैल रहे थे, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने तो जैसे भगत सिंह के लिए अहिंसा के सारे रास्ते बंद कर दिए, और उसके बाद जो हुआ उसका तो इतिहास साक्षी है। तो आइए आज आपको ले चलते हैं उस वीर की वीर गाथा की ओर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी एक एक नदी हमारे लिए गंगा के समान है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
होशियार रहना दे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना दे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना दे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना दे नगर में चोर आवेगा। ओ चोर आवेगा एक दिन, ओ चोर आवेगा एक दिन, कांड आवेगा। होशियार रहना दे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना दे नगर में चोर आवेगा। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। ओ अवध जात नजर नहीं आवे, अवध जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमाएगा। होशियार रहना दे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना दे नगर में चोर आवेगा। नहीं तोड़ के ला नहीं फोड़े ना कोई रूप दिखावेगा। घर नहीं तोड़ के ला नहीं फोड़े ना कोई रूप दिखावेगा। ओ इस नगरी से उसे काम नहीं, इस नगरी से उसे काम नहीं, तुझे उठा ले जाएगा। होशियार रहना दे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना दे नगर में चोर आवेगा। कहे कबीर यहाँ मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। कहे कबीर यहाँ मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। रे मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर आवेगा। किशन, ओ किशन। हाँ भाभी। अरे किशन, मुबारक हुई मुबारक। क्या बात है, इतनी खुश क्यों दिख रही हो? अरे इतनी खुशी की बात है, तेरे घर मुंडा जन्मा है। मुंडा मुंडा हुआ है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और क्या? अरे चाची सुनती हो? अरे सब सुनो, सरदार किशन सिंह के यहाँ मुंडा जन्मा है। मुंडा मुबारका जी मुबारका। ये तो बहुत खुशी की बात है, आज तो जश्न मनेगा। किशन, ओ किशन, वीरे किथे चले जाता है तू? सुनता है अजीत सिंह नू रिहाई मिल चुकी है जेल से। क्या अजीत सिंह नू रिहाई मिल चुकी है जेल से? वीरे तूने तो ये बहुत खुशी की बात सुनाई है मेरे को। आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, ये तो बस रब की दुआ है। अरे किशन, तेरा मुंडा तो बड़े भागों वाला है रे। नाम रोशन करेगा नाम। साडे परिवार उत्ते कीती
मैं खेलने जा रहा हूँ। ओए अंशु, ओए तरुण, आ जाओ खेलते हैं। आ गए भाई, आ गए भगत, आज तू बहुत देर में आया। बहुत इंतजार करवाया हमने। अब क्या खेले? पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। नहीं, छुपन छुपाई खेलते हैं। आंख में चोली खेलते हैं। हाँ ठीक है। भगत, अब भगत तेरी बची है। आजा आजा भगत, भगत आजा आजा, आजा इधर आजा। चलो अब कुछ और खेल खेलते हैं। हाँ भाई मैं भी थक गया, और कुछ खेलते हैं। हाँ भाई भगत, अब मैं भी थक गया, कुछ और खेलते हैं। तो फिर क्या खेलें? अरे भाइयों नाराज क्यों होते हैं? चलो पोसंपा भाई पोसंपा खेलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। भगत अब तो तू हमारा गुलाम है। अब तो हमारा गुलाम है। गुलाम? ये गुलाम क्या होता है? भगत, ओ भगत पुत्र, ਇੱਥੇ ਕੀ कर रहे तू? खाना नहीं खाना तेनों? चल बैठ इधर। बेबे, पर तू मेरे को ये बता, ये गुलाम क्या होता है? गुलाम पुत्र जिस पर कोई दूजा राज करदा, जैसे अपने देश विच अंग्रेजों दा राज है। बेबे, अंग्रेजों दा राज क्यों है? यह एक लंबी कहानी है पुत्र। बहुत साल पहले अंग्रेज हमारे देश विच आए थे। जिवे किसी के घर कोई मेहमान आता है और हमने उनकी आवभगत की, पर एक दिन ऐसा आया कि वो मेहमान हमारे ही घर का मालिक बनकर बैठ गया और हम पर अपनी हुकूमत चलाने लगा। इसीलिए इन चंद अंग्रेजों ने हम करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना लिया। बेबे, लेकिन करोड़ तो लाख से ज्यादा होता है ना? तो हम इन अंग्रेजों को मिलकर भगा क्यों नहीं देते? भगा तो सकते हैं पुत्र, पर इसके वास्ते हम सारे देशवासियों को एक होना पड़ेगा। बेबे बस। क्यों है पुत्र, खाना तो खा ले। बेबे तू देखना, मैं बड़ा होकर सबको एक करूंगा और इन अंग्रेजों को खदेड़ कर इस देश से बाहर करूंगा। अच्छा। सुनो 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 भाइयों सुनो, हर खास आवाम को यह इत्तला दी जाती है कि जनरल डायर के हुक्म से शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, जिसके तहत जो कोई भी रात 8 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। सुनो सुनो।